Hello everyone. Welcome to another webinar on commodities, insight, trend, and forecast. This is 33rd webinar on this topic. So, I am very excited. The commodity market is in full of action. Gold and silver have hit new highs. Volatility is keeping everyone alert. So, today we will talk about what's driving this rally and what to expect next. So, let's start with the gold. Today, gold spot hit, I think, new high of 4180 ounce per dollar. Also, the silver hit new high of 53.51 ounce per dollar. So I believe gold silver price at new high because market is reacting to growing geopolitical and economic uncertainties. We have seen that the US president has indicated that they will impose additional 100% tariff on China from I think 1st of November. So all these factors are impacting the volatility in gold and silver. Again, there are news that there is a deficit of silver in market. So without wasting time, Seth, I will come back to you. Uh, your views on gold and silver. We have already seen big rally. So over to you. Yeah, thank you, Jitendra. गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे हमने देखा या अरविंद ने जैसे सॉरी जितेंद्र ने जैसे हमें बताया कि गोल्ड और सिल्वर ने न्यू हाइज बनाए। वी हैव सीन न्यू हाइज इन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर एज वेल। that there are major fundamental reasons going on behind it which is driving the prices higher। बहुत सारे fundamental factors है जिन्होंने prices को काफी ऊपर तक लेके गए हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि गोल्ड में हमें जो रैली देखने को मिली, द मूवमेंट व्हिच वी सॉ इन गोल्ड, द high on high every day we saw, like, new highs coming up. So the main reasons behind, the main fundamental reasons behind were the central bank buying। जो सेंट्रल बैंक से अक्रॉस द ग्लोब मेजर सेंट्रल बैंक से उनकी बाइंग काफी हो रही है। सो देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन इन देयर फॉरेक्स रिजर्व। इसका मतलब क्या है? एक फॉरेक्स रिजर्व में करेंसी होल्ड होता है, उसी तरह गोल्ड भी एक पार्ट होता है रिजर्व का। तो व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज अ काइंड ऑफ डी डॉलराइजेशन जो हम मार्केट में सुनते आए हैं, डी डॉलराइजेशन। सो व्हाट डज इट मीन? दे आर रिड्यूसिंग द एसेट व्हिच आर डोमिनेटेड इन द यूएस डॉलर। द यूएस ट्रेजरी जो होल्ड करती है सेंट्रल बैंक्स, हर मेजर सेंट्रल बैंक्स, वो कम होते जा रहा है। और गोल्ड का जो एसेट, जो दी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड जो फॉरेक्स रिजर्व में रिजर्व्स में होल्ड करते हैं सेंट्रल बैंक्स, वो काफी बढ़ते चला है। तो मेजरली अगर हम देखें तो डॉलर इज लाइक लार्जेस्ट व्हिच इज होल्ड लाइक ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 58 60% तक होता है। उसके बाद अलग करेंसी होती है, यूरो होती है, यूके पाउंड होता है, येन होता है, चाइनीज। सो लॉट ऑफ अदर करेंसीज आर आल्सो। बट अगर हम देखें तो डॉलर के बाद सेकेंड नंबर पे अब गोल्ड हो चुका है विच इज 21% ऑफ द रिजर्व होल्डिंग्स सेंट्रल बैंक का। तो इस तरह से अगर हम देखें तो गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है जिस तरह सेंट्रल बैंक से। उसी तरह वी आर सीइंग लॉट ऑफ डिमांड फ्रॉम द ईटीएफ साइड और यू कैन से द इन्वेस्टमेंट साइड, मेजरली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जापान में, फ्रांस में, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर विच हैज बीन स्टार्टेड आफ्टर द डोनाल्ड ट्रम्प टुक प्लेस एज प्रेसिडेंट। तो अगर हम देखें तो लॉट ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, देन जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज तो चल ही रहे मार्केट में। लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज विज स्टिल प्रिवेलिंग इन द मार्केट, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर, और यू से Israel Palestinian war which was going on. Maybe there is a peace deal which has happened right now. Then we saw Afghan and Pakistan had an issue at the border. So a lot of geopolitical concerns we have been seeing। हम बहुत सारे geopolitical concerns देखते हैं। तो इस वक्त पे क्या हो जाता है, जो प्रेशियस मेटल है उसका डिमांड काफी बढ़ जाता है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड हो जाता है। तो देयर आर सेंट्रल बैंक बाइंग, इन्वेस्टमेंट डिमांड इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ईटीएफ में डिमांड बढ़ रहा है। तो मेजरली ऑल दिस रीजंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू द राइज इन द गोल्ड प्राइसेस। अब हम आते हैं सिल्वर पे। अगर हम देखें तो सिल्वर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। दैट इज मेजरली इसका जो यूसेज है, इंडस्ट्रियल डिमांड इज वेरी हाई राइट नाउ, एंड इट वुड बी अ फिफ्थ कंसेक्यूटिव ईयर जहां पे सिल्वर डेफिसिट में पाया जा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि द प्राइसेस आर मूविंग हायर। इंडस्ट्रियल डिमांड अगर हम देखें तो ईवी में यूज होता है, एआई चिप्स में यूज होता है, मदरबोर्ड्स में यूज हुआ किया जाता है, सोलर पैनल्स में। तो इंडस्ट्रियल डिमांड जो सिल्वर का है वो काफी बढ़ रहा है। ऑन द अदर एंड ईटीएफ में भी काफी डिमांड बढ़ते जा रहा है फॉर द सिल्वर। सो अगर हम देखें तो द डिमांड इज हायर एंड देयर इज लेस सप्लाई। द सप्लाई नहीं है, डेफिसिट में। अगर हम देखें तो अभी हम
सी सिंपल एक टर्म है कि एक कॉन्टेंगो और एक बैकवर्डेशन होता है। अभी हम अगर देखें सिल्वर में काफी वक्त से हम सुनने में आ रहे हैं कि सिल्वर इज इन बैकवर्डेशन, सिल्वर इज इन, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम देखें तो जो स्पॉट प्राइस है उससे हमेशा अपना फ्यूचर प्राइस जो होता है वो हायर होता है। दैट इज वाई, बिकॉज इसमें कॉस्ट ऑफ कैरी होता है, यू लाइक यू नो, आप अगर आप कोई चीज बाय करते हो तो उसका स्टोरेज कॉस्ट होता है, इंटरेस्ट, सो लॉट ऑफ कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन होल्डिंग दैट प्रोडक्ट। तो उसके जो फ्यूचर प्राइस होता है वो ऑलवेज हायर होता है। बट अगर हम देखें तो अब फ्यूचर प्राइस कम है, like you know the future price is lower. That is why, because अभी लोग जो है वो बोल रहे हैं कि we are ready to pay the premium and we want the delivery, we want silver। तो सिल्वर का सप्लाई क्रंच है मार्केट में, जिसके कारण अगर हम देखें तो जो रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो प्राइस हायर है कंपेयर टू दी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ बैकवर्डेशन, और ये यूजुअली होता है जब सप्लाई क्रंच होता है, डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट इज टू हाई इन द मार्केट। तो इस वक्त पे मेजरली कमोडिटीज बैकवर्डेशन में जाते हैं। So I will share my screen and let's see what are the price levels. Yeah, so Saib, so just wanted your view on that upcoming Fed meetings. I think one is line up in October and second one is December. So what is the expected from market? And is this because prices are already rallied? So is this already discounted or your views? Sure. Thanks, Jitendra. See, US Fed is expected it will cut down the interest rates by 25 basis point each in each meeting. Like, so total will be 50 basis point, which is left by in October and in December. अगर हम CME Fed Watch tool अगर देखें तो more than 90% expectation है कि अक्टूबर में 25 basis point rate cut होगा और around 80% in December. Yes, there is a lot of thing has been captured in the market right now. अगर हम देखें गोल्ड या सिल्वर में तो जो एक्सपेक्टेशन फेड की तरफ से है वो ऑलरेडी काफी हद तक तो वो डिस्काउंट हो चुका है, और हमने देखा कि 25 बेसिस पॉइंट यूएस ने हैज डन, यूएस फेडरल रिजर्व हैड कट डाउन द इंटरेस्ट रेट इन सितंबर एज वेल। नाउ द मेन क्वेश्चन बिकम्स लाइक why when inflation is expectations are higher, then why US Fed is still cutting the interest rates? See, there are times when US Federal Reserve has to decide whether they have to decide on the give more weightage to the inflation or the economic uncertainties, or the job data. So we saw a lot of the job data were pretty negative. हमने देखा कि job data जो आ रहा था वो बहुत स्लो डाउन दिखा रहा था लेबर मार्केट में, जिसके कारण यूएस फेड ने सितंबर में रेट कट किया, और आगे चलकर भी हमें उन्हें देखना होगा, बिकॉज फेड इज डेटा डिपेंडेंट। जिस तरह डेटा आता है उसके बेसिस पे फेड डिसाइड करता है कि आगे उसे इंटरेस्ट रेट कट करना है, पॉलिसी ईजिंग करना है या टाइटनिंग करना है। अब दूसरा एक मेजर क्वेश्चन हो गया कि गवर्नमेंट शटडाउन है यूएस में, विच इज ऑल्सो मेजर कंसर्न, जिसके वजह से हमने देखा बुलियन प्राइसेस वर ऑल्सो राइजिंग बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। गवर्नमेंट शटडाउन होने से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट भी आता है। दूसरा है कि कोई भी डेटा नहीं रिलीज होता है बिकॉज गवर्नमेंट शटडाउन है, तो जो डेटा गवर्नमेंट की तरफ से आता है, जिस तरह इन्फ्लेशन डेटा हो या आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा हो, वो नहीं रिलीज होता है। तो दिस मेक्स यूएस फेड के लिए एक क्या बोलते हैं उसे, इट विल बी अ चैलेंज फॉर यूएस फेडरल रिजर्व during this monetary policy, because they are data dependent, and right now they won't be having data coming up right now, and there is no any news regarding the US government shutdown कब बंद होगा, when will the it will be end and everything goes normal. So there are a lot of uncertainty which is happening in the market, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि precious metals काफी रैली हो रहे हैं and they are moving higher. So let's go ahead with the charts. Let's see what are the levels. तो अगर हम देखें ये इंटरनेशनल चार्ट है, अगर हम देखें कि गोल्ड अगर हम देख 4121 के करीबन चल रहा है, इसमें अगर हम देख एक मेजर सपोर्ट है 4000। अगर 4000 के लेवल अगर वो नीचे सस्टेन करता है तो हमें कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज अ रिवर्सल इन द ट्रेंड। गोल्ड एंड सिल्वर still looks to be very positive in the coming year as well. अभी भी गोल्ड और सिल्वर काफी तेजी कर सकता है, there is no denial that, but there could be a chances कि एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अगर 4000 का लेवल ब्रेक करता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, तो हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है 3900 से 3800 के लेवल तक। उसी तरह अगर हम गोल्ड देखें एमसीएक्स का,
जस्ट मोमेंट या सो अगर हम M6 गोल्ड भी देखें तो 1,22,000 के करीबन का सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है तो हमें जाके कहीं ना करेक्शन देखने को मिल सकता है 1,18,000 तक। बट स्टिल आई एम सेइंग देयर इज नो रिवर्सल इन द ट्रेंड। ये सिर्फ एक करेक्शन होने की चांसेस है बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, इतना रैली हो चुका है एंड RSI इज आल्सो एट द ओवरबॉट जोन, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन लेने के चांसेस है। बट स्टिल आई एम repeating again, there is no reversal in the trend. Overall, gold and silver looks to be on the positive side. Now look at the silver chart. अगर हम silver international chart देखें, we see the $50 का एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट $50 का लेवल का एक मेजर सपोर्ट है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो हमें कहीं पे एक करेक्शन देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स $47, वरना नहीं देखने को मिल सकता है। उसी तरह अगर हम इंटरनेशनल डोमेस्टिक सिल्वर की तरफ देखें तो डोमेस्टिक सिल्वर में हम अगर हम देखें तो 1,50,000 के 1,52,000 के करीबन का एक सपोर्ट लेवल है। अगर वो ब्रेक करता है तो ही हमें डाउनसाइड नीचे में 1,48,000 तक करेक्शन देखने को मिल सकता है, वरना देयर इज नो चांस दैट देयर विल बी अ करेक्शन। मे बी ये लेवल से ऊपर जा सकता है या ये लेवल पे कंसोलिडेट कर सकता है। जब तक सो इंटरनेशनल में गोल्ड के लिए $4,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल है, उसी तरह सिल्वर में $50 का एक मेजर सपोर्ट है। अगर उस दोनों के इन लेवल्स के नीचे इफ दे सस्टेन बिलो दिस लेवल्स देन वी मे सी सम करेक्शन इन बोथ द कमोडिटीज। Over to you, Arvind. Yeah. Jitendra, sorry. Thank you. So, as you seen, I can summarize that ki only gold and silver looks positive. Only minor correction can aspect, but that won't be the trend reversal. Yeah, moving to the next section, that is the energy. I think recently we have seen that ki there was a OPEC का output का ये था news था, and the output increase was lesser than expected. So that was one news I think, and because of that the prices were volatile. I think after this China के ऊपर जो 100% tariff का discussion आया या जो point आया था, but I think today morning also there were some softening, some soft signals from US that ki they may there is a meeting schedule between the Trump and Trump and Chinese president. Yeah. So I think it says that I think it is in still it is on track. So I think these things are I think impacting the prices of crude oil, we can say. So your views, Seb? Sure. See, जैसे आपने कहा, you have already mentioned that OPEC has started increasing that output, which they have cut down from past years. So we saw 2.2 million barrels per day का जो एक कट था वो उन्होंने बढ़ा दिया है before the expectations. Again, that was दूसरा एक ट्रांच है जो 1.6 billion barrels पर डे के करीबन जो दूसरा एक कट था उसी को भी वो अब बढ़ा रहे हैं। सो ओपेक साइड से अगर हम देखें तो देयर इज लॉट ऑफ सप्लाई कमिंग अप फ्रॉम द ओपेक साइड। मे बी द एक्सपेक्टेशन था कि जो नवंबर में जो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा उससे कम इंक्रीज किया, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो देयर इज अ लॉट ऑफ सप्लाई व्हिच इज हैपनिंग इन द मार्केट। सो इवन फ्रॉम द इराक इफ वी सी द which there was a issue with the pipeline which has also started which moves through Turkey. So वहां से भी oil supply improve हो चुका है। So there is a supply in the market जिसकी वजह से हमने downside pressure देखने को मिला हमें crude oil prices में। As you have already mentioned again about the China the tariffs on the China by US, yes they have mentioned that they will US has warned that 100% tariff would be levied on Chinese products starting from the November, but they will have a meeting. So he has softer his tone later on. But see, there is an uncertainty regarding whether it will be levied or not. That is a big question. They will have a meeting. If they come up with some solution, it would maybe they will not put it, but still they are facing 30% tariff and this additional 100%, so it may take it to 130% tariff. So that will again have a major negative impact if it moves ahead with. And even the China is not going to sit, they are also retaliating. They will also retaliate with some of the other measures. So what is happening? This trade war concerns it's getting ignited. So if this keeps on going, it will have a negative impact on the crude as well, and it will be very positive for the bullions. So yes, but still overall crude oil prices looks negative. एक दूसरा कंसर्न जो सपोर्ट क्रूड को दे रहा था, that was Russia Ukraine war.
अच्छा the Ukraine has intensified its attack on Russian energy infrastructure, जिसकी वजह से सप्लाई का डर था कि सप्लाई हिट हो सकता है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल भी एकदम से तेजी से नहीं गिर पा रहा था. But overall, crude oil looks to be on the negative side. Let's see on the chart how it yeah, looks. what level? Yeah, what level we are expecting? Yeah. Yes. So now we'll look at the November contract rather than going ahead with the October, because 20th is an expiry for the October contract. अगर हम 11 नवंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल अभी भी डाउनसाइड ही देखने को मिल सकता है अपने को. सी 5000 के, जस्ट होल्ड ऑन, गिव मी अ मोमेंट. या अगर हम देखें तो ये एक लेवल है 5100. अगर ये ब्रेक कर देता है 5000 का, नीचे में एक अनदर सपोर्ट लेवल है. अगर 5000 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर हमें डाउनसाइड 4800 तक भी देखने को मिल सकता है ऑन एमसीएक्स. उसी तरह अगर हमें इंटरनेशनल लेवल्स देखें तो $55 का एक मेजर सपोर्ट लेवल है इंटरनेशनल में. और अगर ऊपर की बात करें तो 5600 का एक मेजर रेजिस्टेंस है. अगर वो ब्रेक करता है तो हमें कुछ ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 6000 levels. But overall, crude prices looks to be on the negative side. There are chances that it may break 5000 level and come down towards 4800. So major support अगर लेवल की हम बात करें क्रूड ऑयल में on MCX तो वो 5000 का लेवल. Yeah, thank you, Saib. Yeah, let's move to the natural gas. I think there was some forecast that this year the US weather would be colder or winter would be colder. So, what your expectation on natural gas? Sure. अगर हम देखें तो नेचुरल गैस प्राइसेस में अगर हम एक डाउनसाइड प्रेशर देखने को मिल रहा था, बिकॉज इन्वेंट्रीज भी बढ़ रही है कंपेयर टू व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस. सो देयर इज अ अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज वी कुड सी. बट जो क्लाइमेट मेजरली जो नेचुरल गैस का मूवमेंट होता है वो फोरकास्ट पे डिपेंड होता है कि हाउ दी फोरकास्ट आर गोना, वेदर इट्स गोना बी टू हॉट और टू कोल्ड. तो प्रीवियस टाइम पे ऐसा था कि थोड़ा कम कोल्ड होगा, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से कोल्डर, देयर वुड बी अ कोल्डर वेदर, बट स्टिल वी सॉ अ डाउनसाइड प्रेशर बिकॉज देयर आर इन्वेंटरीज स्टिल देयर. सो दैट इज, सी, वन थिंग इज पुटिंग अ डाउनसाइड प्रेशर, वन थिंग इज लिटिल बिट सपोर्टिव. अगर हम देखें तो नेचुरल गैस उतने इससे गिर भी नहीं रहा है और उतनी तेजी से बढ़ भी नहीं रहा है. बट नेचुरल गैस कैसे, जैसे द वे द winter season starts, it starts moving up. It depends upon the forecast, how the colder the weather is. If the weather is too colder, the forecast comes out that weather are too cold, then we may see some upside movement. Otherwise, फिलहाल अगर हम देखें तो टेक्निकल अगर चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो हमें थोड़ा सा डाउनसाइड प्रेशर ही देखने को मिल सकता है. 260 टू 60 लेवल का एक अच्छा सपोर्ट है. अगर ये ब्रेक करता है तो डाउनसाइड प्रेशर देखने को मिल सकता है, और अगर इसको दोबारा ऊपर के साइड जाना है तो इट हैज टू सस्टेन अबाउट 300 लेवल. सो यू कैन से 300 to 260 is the major a big range in which the natural gas prices are expected to move for a time being. Yeah. Thank you. So let's move to our next category, next segment, that is base metal. We have recently seen there was some news on temporary closure of mines for coppers, and prices of coppers increased sharply. So how is the situation now, and how we are expecting the copper prices in coming days? Yeah, sure. See, हमने देखा कि again the copper had made a new highs. We saw a upside movement in the copper prices as well. That was majorly because of the concerns on supply. The mine closures across major mines have created a supply crunch in the market. अगर हम देखें तो बीच में मैं एक इंडोनेशिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन के बारे में न्यूज आई थी, which actually produces is approximately 3% of the global copper. So it's a supply, तो इस तरह से काफी माइंस में इश्यूज है, whether it is Indonesia, whether it is DRC, which is a democratic republic country. So there are then you have got a issue from Peru or Chile. So the various mines में और कुछ कंपनीज में अपना आउटपुट expectations be reduced किया, जिसकी वजह से supply there is a tension or there are worries over the supply. So because of which we saw an upside movement in the copper prices.
On the other hand, recently, if I'm not wrong, a day back or something, international study group, जो एक कॉपर का इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप है, उन्होंने फोकस दिया है कि अगले साल 2026 में the copper will not be the copper will not be in surplus. It's gonna be in deficit. They were expecting in the month of April, they had given a forecast where they were expecting a surplus of copper around 2 lakh tons in 2026. But now they have revised it and they have made it a deficit of 1,50,000 tons. So that is a major change in the forecast. So that's another reason where we can see that 2026 is expected to remain in the deficit. So the copper prices are positive. They look to be on the positive side. Coppers are used majorly again in the EVs and renewable energy. So the demand for the copper will also be higher. And mine closure issues will have a negative impact. Yes, the trade war concerns will have a negative impact on the economic growth. If this continues, then we may see some downside, downside pressure, but there is no reversal in the copper. The copper looks to be on the positive side because the supply crunch की जो बात है, that will outweigh the demand, the concerns from the trade war economic concern, उसके कारण अगर ये समझो US and China come up with a deal, so then again that will be a very positive for the copper prices. On the another front, if we see China comes up with some new stimulus packages to support its economic growth, then that will again be very supportive for the copper prices as well as the silver prices, because silver is also an industrial metal. तो जो भी industrial metals है उसके लिए बहुत positive हो सकता है monetary easing from major central banks and even the stimulus packages coming up from the China would be very positive. So overall the copper looks to be on the positive side. Let's look at the chart. अगर हम चार्ट देखें तो कॉपर ने 1000 इफ आई एम नॉट 1026 के करीबन का जो हाई बनाया था, ओवरऑल स्टिल कॉपर लुक्स टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड. डाउन साइड 950 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो हमें कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 920 लेवल्स, वरना इट विल कंटिन्यू on the it will consolidate and move higher, and if it breaks 126 का जो हाई बना था, अगर वो ब्रेक करता है तो हमें ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है 1035 to 1050 level as well. So overall copper looks to be on the positive side. Okay. And any view on other base metal, if you can? Yeah, sure. Yes, we can go ahead with the zinc as well. Yeah, sure. अगर हम जिंक भी देखें तो जिंक भी पॉजिटिव है. ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल्स लुक्स टू बी स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड. अगर जिंक 300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वो it will move higher. Otherwise there could be some consolidation, and if it is breaks below 290, then we may see some correction in zinc towards 285 level as well. So overall zinc में it is a positive, but not that positive as what we are seeing in the copper prices. Let's see with the aluminium as well. अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम भी पॉजिटिव लग रहा है. इफ इट ब्रेक्स 268 to 70 लेवल तो वो और दोबारा ऊपर जाने की चांसेस है. इट मे मूव हायर अगेन. If it goes beyond 270, then we may see some upside movements till 280 as well. और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो एक 250 260 लेवल का सपोर्ट लेवल है. अगर वो ब्रेक करता है तो ये लेवल जो है 256 to 55 लेवल तक नीचे में डाउन साइड आ सकता है. ओवरऑल स्टिल एल्यूमिनियम आल्सो लुक्स टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड. जिंक इज पॉजिटिव, एल्यूमिनियम इज पॉजिटिव, कॉपर इज पॉजिटिव. ओवरऑल अगर हम देखें तो बेस मेटल्स पॉजिटिव है. Crude oil on the downside note है, and bullions also are on the positive side as well. Over to you, Chintan. So overall market, commodity market looks bullish right now, correct? Kind of. Only there is a pressure in the energy sector. Yeah. Otherwise, if you see, industrial metals look to be positive, as well as your precious metals looks to be on the positive side. Yeah, but Saib, as China is the biggest producer and consumer of these industrial metals, if in case there would be escalations and this additional 100% tariff will be imposed on China by US, so any impact on prices or supply side, or any correction is expected because of oversupply? That's what I said. There could be a possible correction in the, but I'm not saying there will be a reversal in the trend. See, majorly because that's what I said. Industrial metal में अगर हम जिस तरह copper की बात की तो there is a supply issue. सही, mining issues are going on. So that will outweigh, that will have a more weightage.
to support the copper prices to move higher. दूसरी बात यह है कि ऐसे वक्त पे whenever there is a trade war concerns या चाइना को लगता है कि जो टैरिफ्स लगाने की वजह से उसके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ सकता है, या because they have to look out for the another markets to to supply their products if they prefer moving ahead, तो उस वक्त पे एक थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है. बट देर आर अनदर चांसेस कि चाइना इस इम्पैक्ट को लोअर करने की कोशिश करेगी, to have this impact to be on a lower side. So there are chances that may come up with more stimulus packages to support the economic growth. अगर ऐसा कुछ आ जाता है न्यूज़, तो वापस वो बेस मेटल्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है, इंडस्ट्रियल मेटल के लिए पॉजिटिव हो सकता है ओवरऑल. Yeah. So coming back to again US, definitely as we've seen, ki Fed chair Powell's says that ki their approach is data driven and inflation is another concern for them. So as of now, the US shutdown, their data are not coming, and I think there is some. Press conference is scheduled today evening, correct? And we may get some clarity from US Fed on interest rate cut or any other areas. Yeah, there is a meeting. There's a speech from US Federal Reserve Chair Powell today. We may get some hints from him. Let's see what, because usually it's not necessary that at every event they speak about the about the monetary policy, or there could be a chance he may speak about the monetary policy and reiterate the same thing, saying that it is a data dependent. They are still worried about the inflation, but they are more skewed towards the slowdown in the labor market. अगर कुछ ऐसा statement आता, if there is a little bit of a dovish statement coming from the Fed, तो हमें कुछ upside movement देखने को मिल सकता है. और अगर hawkish side पे आ जाता है कि if he say focuses more on inflation and shows more concerns over the inflation rather than the economic perspective or job data, तो अगर थोड़ा हॉकिश हो जाए तो कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिल सकता है. वरना ओवरऑल देयर कुड बी अ चांस कि वो कुछ भी इंडिकेशन नहीं दे एंड ही रीइटरेट द सेम थिंग व्हिच ही हैड ऑलरेडी स्पोकन बिफोर, तो मार्केट में इतना मूवमेंट आने की चांसेस नहीं है फिर. Okay, that's great, Asif. Just I wanted to inform my clients that definitely as the commodity prices are volatile today, from beginning of the day, MCX has increased gold and silver margin by 1 and 1.5% respectively. So I request that keep watch on your position, track your position, track your margins, because commodities are very volatile. So again, one just information I wanted to share, MCX is launching Bullion Index options from 27th of October. Let's see how this comes out and how the liquidity comes. So according to liquidity, we may launch that index, but just wanted to share that information. So thank you, Saib, for joining and sharing your view. Thank you everyone for joining. Definitely gold and silver are shining, market are moving, so stay alert, track your positions, be informed, and see you in next webinar. Thank you webinar thank you for joining this webinar. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.